So, welcome back, guys, in our part two of building our own Claude Code. So, as I said, I will be drop the link of phase one in the chat box, so you can get that in the stream number one. But before we are going to start anything, let me give you the brief demo what we have just built. By the way, this is just an version one, and still this is very powerful. You just need to go to my repository. I will show you the link just a bit. This is my all the office work. Okay, so GitHub slash Orion. Okay, this is the repo link. This is public. You can just clone that, git clone, and all of that stuff. Follow the steps. Okay, cd npm install and yep. So let me give you also. After you are going to run that, let's go and run the npm install command for all the dependencies that we need to install. Okay, then let's go and build our application one more time and make sure that this is uh, not gonna fail. Okay, make sure that build should not give any kind of error. Then let's go and set up your this API key. Okay, not like that. Uh, Set like that. So you just need to delete your and go to NVIDIA model scheme. So according to you, you can select any model, whatever model you have selected is quite good. Let's copy the this thing and let's paste it out and hit the enter button. And then you just need to go to our CLI test index.js. Why we are using this folder? Because we already run the build command and we are working with TypeScript. So TypeScript will be generate the this folder. Obviously, you can change the outfit also. Hit the enter button and you're good to go. And you can start with some prompts here, just like uh, I'm tell you the one of the test prompt, and this is the prompt that tests our AI agent is working fine or not. Let's hit the enter. Let's the file. Okay. So you can see this directory part dot app root file get ignore. Yep, you can see here. So this is a very good output that I am see. So you can see this is the very proper way to set that. So you can imagine what kind of application we are going to build. So this is just an part one, phase one. All four phases are going to be determined, so you can understand what kind of depth we are going to achieve in this whole project. So you can also run this in any project or any directory. It can also run the command. It can do the any session. And I don't know if I do the slash. No, this thing is not working. So I hope you got my point. And you can normally ask the question here, hello, how are you? Just like that. But this is the one prompt that that is going to done the agentic work. You can also try to do change this file to something other, and sky's the limit for you if you understand this. Okay. So what is the phase number two? So currently, if you see, this is the very bad UI that we have built in our phase number one. This is a no structured output, no Claude like. But believe me, guys, we are going to hit the Claude level architecture as you can see in our phase one. So let's go and let's build our UI using the React TUI, Ink TUI, not the React TUI. So currently we are using the red line and chunk for our CLI, but we are going to replace that with TUI. If you don't know TUI, let's search on internet, go to their code base. It's open source, I think. And let's add some dependencies, just like npm add react dom ink and slash korean cli. So this is a slash y because we are going to add all of this react link dom wagera thing in our korean cli folder, not in our main source folder. So let's go and let's add the type of that. So for that the command is like that. Okay. Okay, this is going to be get done. Okay, I will close that and open our agent file. Inside that, let me remove that because this is the pretty oldish form of writing the classes in TypeScript that AI will give me.
Mainly true private imports. Okay, I'm just testing one more time. See what kind of thing it's going to take. Okay, okay, okay. I don't know is that work or not. Maybe using the help of okay. Let's see if I just copy and paste it out. And, let's wipe it. So it's not gonna work. Or why? ठीक है fine. ठीक है. Options this dot on screen event. Okay, so what we can do, I can also create the gist, by the way. You can get this code from there also. So we have the errors, that same error that we are going to get solved. So let's go and quick fix that. Afterwards, I'm going to create the gist. Okay, now let's go. Yep, we don't have any changes here. And agent type, again, the agent type. Okay, I will just going to do that. Let's hit agents. ये क्यों error दे रहा है भाई? Module dot type has not exist. Agent, agent, agent event. Okay, let's find it out. We have the agent event. We don't have. So we need to create that. We need to create that because we are working on agent. So okay. So let's copy this. Go to my GitHub. Uh, just I'm not finding. Just okay. This is the agent.ps file and adding the sort wrap, pasting the code, create the public gist, and let's add. So you can find out on here. I hope you got this. And let me check my mic and everything. ओके यार थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम रहेगा तो इसको थोड़ा सा आप बेयर मिनिमम कर लेना प्लीज ठीक है लेट्स गो एंड ऐड द एजेंट इवेंट in our type dot in our types file ठीक है so let me also do that agent event let me add the agent option and here we are going to add the export interface mm, agent events okay and in that event we are going to need some things like we need the on stream on thinking tool call and on tool result ठीक है agent option we have the defined tools also and any other thing we don't touch ठीक है so now let's go inside our let's go and now replace the entire package CLI source with the proper Ingbest UI. Create these files. Uh, let's me go inside the CLI and inside that we have the disk. Okay, we don't work on that. Source. Let's create the components because we have some kind of components and inside that we have the thinking block because this is the thinking block. AI is not just typing the things. It will be first thing and then it will be generate the response. So let's import some props. Let's import some packages and let's write some props. And afterwards, let's go and export function called as thinking uh, block and we need and that function need text and done okay and props okay if we don't have text then just do return it's not required return null
But if we have, then return the box, and let's give them flex direction. Uh, Direction is equal to uh, column and margin bottom. Okay, you can definitely, but this is not the our tailwind thing. Mm, Gap. Let's add the gap of 1. Let's add some dynamic nature. Done. If we don't done, then we need to render the text of text. Mm, Text. Uh, the color of text is color is equal to अबे यार gray, and spinner. This is a self-closing component, by the way, and type equal to dots. Okay, so this is the thing. Text. Uh, if we have the text, if we done, by the way, if we done, this is the block. If we don't done, and if we done, then inside that let's add color. Color is again gray, gray gray, and dim color. Okay, and let's add thinking. Maybe you can improve the UI and merge your PR on that. So I can also test it out, and if I like that, I can definitely merge that on the main source code. But make sure that you can follow the standard PR practices that we usually do. Box. Let's add one more box, and margin left. Okay, this is not our normal tailwind that we used to write, because we are not making the uh, what we say web page. We are styling our terminal. So a terminal, I hope it will be understand, but I'm not sure, because this is the first time that I make something the CLI tools. So that's why I'm not pretty uh, comfortable with this kind of founting and styling system, but hopefully you can okay, this is not dynamic web. You can see I'm losing my patience. Adding X. Don't worry, if you don't want to type them separately, you can copy from the code base. But if you go to the code base, there will be one thing that is necessary to do, like the repo and clone that. Okay, and leave your beautiful comments and wrap. And you can see the demo of our AI agent starting of the stream. It's very very powerful. It's very powerful, by the way. It's very powerful. Okay. This is our entire component, and don't worry, this is my as usual TypeScript errors. Don't worry, don't focus on that. Okay. And let's go and let's add one more component called as our calling tool call block. Okay, so in that we are going to render what kind of tool AI is going to use. So let's add some props here also, and this time I'm not going to type it out. Let's add some interface for our props, and let's go. I'm just joking, I'm going to type it out. Export function called as tool call block. Okay, in the terminal, what is happened, we are not targeting any specific corner or anything. We are targeting the block, because terminal is the CLI. It's not the web, it's not the usual thing. Okay, const preview preview json dot stringify, and tool call block, just tool call, by the way, and arguments dot slice 0 to
100. Okay, this is the normal DSA that we usually do. Okay, I made some mistake. I don't think so. Not. No. This is the sorry. My apology. My bad. Okay, so this is the argument preview and result preview. Then afterwards, let's return something with our box with some styling, mm, styling like that. Uh, okay, and in the next thing, let's add one more box for the our tool call name, what kind of tool we are using, and setting icon. And next, we are going to add the tool call dot result, and let's render the box again. I hate this styling, by the way. I'm very used to with Tailwind. I know everyone is very used to with Tailwind, but that is the thing. Uh, you need to cross your comfort zone. ठीक है? Okay, bhai. Hi. Have you completed the E2B series? Yep, I have completed, and I have also integrated this with my other application. Let me show you, and it's working fabulously. If you want the code, but that's the thing that I'm usually make for my own company. For my company, not my own company. I work on that, and you can see I have integrated that here. So I hope you got your point. And यार इसका कुछ करना पड़ेगा. ठीक है, मैं चैट को थोड़ा सा पॉप आउट कर देता हूँ साइड में. ठीक है. निखिल भाई, पॉप आउट किस तरीके से करते हैं? ठीक, मिल गया. ठीक है, चैट को मैंने पॉप आउट कर दिया है ऑल द वे. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ. लेफ्ट साइड में रखते हैं इसको, और इसको मैं करता हूँ राइट साइड में. तो ये प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा. सो लेट्स गो एंड क्रिएट आवर one more component because we are just dumping it out. Mm, मैंने इसको रिप्लाई भी कर दिया भाई. ठीक है. Let's go and again the same imports that we usually do, but this is we are not exporting yet. We are writing one function. This function is for the uh, simple line level difference render. Means we are not up and down the things like that. Whenever I write the function, you got my point. uh, Compute difference. Let's write it camel casing. Nice. So if you want the Nikhil bhai, if you want the preview of that, how that is going to get to work, then you can. I will be share the repo link. Okay, but I need to wipe out some things because I'm using that for my company that I used to work. Okay, can you suggest for resume project? Bro, this is the project that is the hotline. Means this is trending everywhere. If you search on the Twitter, then this kind of projects are ये ये प्रोजेक्ट मचा रहे हैं आजकल. ठीक है. Split. This is the hotline. Means if you build it out, if you make the good UI, if you make the Claude Code or open code like features, and if you just clone it end to end, still also you can get the job uh, in nice CTC, good CTC, and good role. Believe me, because whenever I show this demo on my company will be, bro, what you built. Because this is not the comfort zone. This is the outside your comfort zone. You need to break your comfort zone, and you need to work on a bunch of things because it's styling is pretty hard. There will be no such kind of what we say framework that is available. Just like web, in we have the React, we have the Next, but for the terminals we don't have any specific framework, so you can understand the frames. ब्रो, मैं E2B वाला पसंद आया, बहुत सीखा. थैंक यू भाई. आप आपके सीखने के लिए तो मैंने बनाया था.
आप मुझे एक काम करना, एक कमेंट में कुछ बताना, अच्छे प्रोजेक्ट जो कि आपको पसंद है, और कुछ ऐसे हार्ड प्रोजेक्ट जो कि यूट्यूब के ऊपर हो नहीं रहे. How you get the idea? Basically, I'm working on something like the livable or thing on my company. Not the exactly we have gonna push our entire limits, but in that the problem is initially whenever I make the one prototype, in that I'm using the web containers. So web containers are not that much affordable for my company because they are saying we need to make our in-house solution. And so that's why I come up with the idea कि let's make our own. ठीक है. Let's go and now export the thing. Export function defer block your Twitter handler. यार मैं भूल गया हूँ, एक सेकेंड मैं अभी आपको बताता हूँ. ट्विटर हैंडलर कहाँ पे भाई? आई थिंक मैंने मैंने अपने चैनल के अंदर लगाया हुआ है, आई डोंट नो. बट जस्ट आप एक बार अगर जाओगे ना, तो मैंने अपना ट्विटर लिंक्डइन वगैरह सब दिया हुआ है. ठीक है. यस यस मेरा. नहीं, वो गिटहब है. ओके. तो ठीक है, मैं ट्विटर का आपको दे देता हूँ लिंक, अगर आपको कनेक्ट करना हो तो. बाय द वे निखिल भाई, यू डोंट सजेस्ट एनी आइडिया फॉर द प्रोजेक्ट प्लीज. किधर गया यार मैं? एमडी कुलकर्णी 20. तो लेट मी गिव यू द लिंक. आई थिंक लिंक काम करेगी यार चैट में, आई डोंट नो. कर रही है. Nikhil, why have you subscribed to my channel or not? I just want to ask you, or like the stream if you don't. Let's go and continue with our. And by the way, you can continue with this product also or not. And I just want to ask you, you're building with me or not? I'm not providing this code. I'm not providing the code until we finish the project. So please continue with me, guys. Props and cost difference, compute difference, and old start string versus new string. What's this, my bhai? Return a box. Oh, I hate this thing. I hate this kind of styling. Okay, this is the first and last time maybe I'm working on that. We don't know the future thing. So okay, box. ठीक है, ये वाला बॉक्स था हमारा. ये बॉक्स शुरू हुआ, खत्म हुआ. Uh, okay, let's do that finally. And let me also let's add one more box here, and the styling of that. Okay, this is the styling, and let's add the difference dot map and a line one. So we need to, what we are going to change, we need to pass that now. So text, this is not the self closing one. Let's add key constraint to I, and let's add some color here. Color होगा हमारा line dot type is equal to removed, and so that makes the red, and line dot type is equal to added. ठीक है, is equal to as usual green. ओके. किधर गया मैं लगता है green. And if we don't, there will be a fallback thing na, that we need to add by default. If we don't have a, if our system don't change any line, then by defaultly it will be a gray. And line dot type is equal to
remove. So exact line dot type. I already subscribed and watching the YouTube now. Okay, good. But make sure that YouTube is also good project. But if you want the quickest job and highlighting your resume in whatever company you are applying, this is the project that give you the charm. Okay, this is my honest suggestion because me myself, I'm going to add that in my resume, and this is not the normal YouTube level project, so you can actually use that in your day to day. So if you know me, I'm not like that person ki just make, and I'm not going to use that either. So I'm the one who can use my project. Okay, let's go and let's add the Marathi. हाँ भाई मराठी हूँ. Let's go and let's add the permission prompt. Okay. आप भी मराठी हो क्या? Let's go and let's add the props and imports and types of our, and this is the thing that, so right now what we are going to do, we are going to permission prompt. If AI want to ask something, just like it will be asked some question, should I change that file, should I access the env, so we are going to make that dialog. Okay, so let's add the export. Let's, okay, ये format क्यों नहीं हो रहा? I need to check one more time. Export function, permission prompt, then tool name, arguments on decision or props, everything in props. Okay, कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? There is live. Const, const, if we selected, or let's set some field, set selected. Okay, use set, and by default 0. User, use input नाशिक. ओके, ओके, आप मेरे पास ही रहते हो. ठीक है, मतलब मैं नासिक में नहीं रहता हूँ, लेकिन 3 घंटे का रास्ता है मेरे यहाँ से नासिक का. ठीक है. Const choice is equal to choice dot find whatever the user select, c dot key is equal to input dot to lower. ठीक है. Will you be using the ChatGPT under the hood or same Claude API? No, you need to watch my stream number 1. In that, I'm not going to use any paid thing. The entire system is going to be get free. You don't need the credit card. You don't need to pay anyone. So for our AI usage, I'm going to use this NVIDIA build thing. In that, you will be find out thousands of model and with zero rate limit. Okay, so this is the our mastermind stroke, or what we used to say that कुछ भी आप कह सकते हो इसको. And one best thing about that, it will be come up with the reasoning, and I'm currently using the Kimi 2.5, and you can add your own tool calls also if you go to the code, so you can add your own tool calls and like that. So in our phase 1 we already implement that. If you watch the stream from the starting, then in that I already show you the demo, how our AI thing is going to be get to work. So it's already powerful, but we are making that super powerful.
ठीक है. uh, so I hope you got my point. So we are not using any Claude or ChatGPT. ठीक है. Oh, all right. So you are using the open source AI model to make that. Yeah. And by the way, this is the open source, but still it's so powerful. It's so powerful. If I show you the their side, na models, so you can find out Meta, Llama, Google, Microsoft, all the models, and they are come up with the image generation, reasoning, tool calling, like that. You need to figure out your own what is the best suit for your application. So for our application, we are using the Kimi 2.5. Obviously, you can change your own, or you can change according to your usage or according to you. It completely depend on you. Okay. Choice, and let's set the choice on decision. Uh, choice dot value. Okay, and let's return the box. Again, the same thing. Okay. Give me the bit. Let's. You should use one. Yeah. In my company projects, I also use new subscriber here. Okay. Thank you. Bye. Thank you for subscribing. Okay. In my office project, I used to burn and PNPM. Okay. The code guy. Okay. The code guy. Okay. Uh, निखिल भाई और द कोड गाय आप क्या कर रहे हो currently? You are doing BTech or what you are doing currently? आप working professional हो या फिर आप क्या कर रहे हो? What? Let's add the text. Uh, Masters. Okay. In computer science. Right. Let's add the text. No. We are not adding text here. Let's add some color. Uh, आप मास्टर्स मतलब कौन से कॉलेज से कर रहे हो? और द कोड गाय. Okay, bye. You are going offline. मतलब you are going offline. ठीक है भाई. Uh, let's add the permission require. Okay. Bye bye. Let's add one more box here, and let's add a gap of 1 and margin at top of 1. Okay. Also, we are tool name. Can we show the tool name and Thingifier also? We can do that actually. We can do that. We actually do that. Okay. Mm, okay. Let's add one more box for our white and gray thing. I want to use it. Thank you. Gap. Let's add some gap of 3. Margin at top, not the bottom one. तो आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो ना मेरे साथ? आप कोड कर रहे हो ना? मैंने आपको फेज 1 का कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. ठीक है. आर यू वर्किंग समवेयर मानस? यस, आई एम वर्किंग समवेयर. I work on 2 companies, but currently I'm working as backend engineer in a Pune-based company. Okay, so let's add some text. Let's give some. Oh, this is not the. This is okay. Let's add the maybe ना बातों बातों में थोड़ा सा choice dot map. Hmm, क्या बोल रहे हो? Full stack dev. Yes.
and then add this, and let's shift our text upside and make that good. And now let's add some key. Oh damn, two companies crazy. But currently तो अभी एक ही के साथ काम कर रहा हूँ अभी. बस टाइम नहीं मिल पाता यार, सच बता रहा हूँ. मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लेंट कर रहा हूँ, लेकिन आई लव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड आई वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आल्सो. आई एम कमिंग फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, बट ग्रे. ओके. Text gray, and let's add some more text field. But I think we need, yep, this is not the self-closing one. Color is equal to yellow, and okay, that's it. क्या बोल रहे हो भाई? Hi. Hi भाई, कोई तो नया है. How many years you have been working? If you want to share, you can. If not, no problem. नहीं भाई, मतलब मुझे अभी 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है. मैंने अपने कॉलेज के अंदर ही एक स्टार्टअप के साथ काम किया था. उसके बाद उसके बाद मैंने एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी के साथ काम किया था, और अभी एक पुणे बेस्ड कंपनी के साथ रिमोटली काम कर रहा हूँ. ठीक है. और मेरे गिटहब का लिंक वो सब नीचे ही है, डिस्क्रिप्शन के अंदर. डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ यार, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर है. और किसी ने तो हाय भेजा है. हाय भाई, हाय. ठीक है. ये इतना फंक्शन का बना लेते हैं. उसके बाद थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ कोड करते रहो यार प्लीज. मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई मेरे साथ कोड कर रहा है तो. ठीक है. देखिए, इफ यू हैव अ गुड फंड यू कैन बी ओनर ऑफ योर प्रोजेक्ट. लोल. नो नीड. मतलब इज दिस गुड प्रोजेक्ट फॉर रिज्यूम. Yeah, this is the good project. If you have good fund, you can be owner of this project. Yeah, you are talking about the SaaS one, na? Yeah, you can actually launch that, but that's not that much easy. Nice, being very honest. Okay, so let's add one more called as our message block. I know I'm boring you with writing a lot of code, but yes, this one is a pretty small one. Okay. किसी ने हाय भेजा था, वो हाय फिर से आया ही नहीं मुझे. ठीक है भाई. अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना प्लीज गाइस. ठीक है. इस तरीके से क्लोन तो किसी ने नहीं किया यूट्यूब के ऊपर, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ. ठीक है. क्लोन नहीं कहेंगे, हम अपना खुद का बना रहे हैं. हम क्लोन क्या ही कर रहे हैं, हम ना उनकी एपीआई की यूज कर रहे हैं ना उनका एसडीके यूज कर रहे हैं. तो दिस इज आवर ओन एप्लीकेशन बाय द वे. So you can also add your own features also. So let's go inside our main. This is our CLI now, by the way. CLI. Let me close यार. And don't worry about that. This red quizlies. ये जो है मेरे VS Code पे कुछ दिक्कत है. That's why मैं इसको सॉल्व करूँगा कभी. ठीक है. I was uh, I was front end developer, then moved to DevOps. Now learning backend. Okay. आप कहाँ पर काम करते हो? निखिल भाई and द कोड गाय. आप दोनों वर्किंग हो या फिर लर्निंग कर रहे हो, या फिर व्हाट यू गाइस आर डूइंग करंटली. So you don't have the proper fixed time for the remote owner calling you for the work. uh, मेरा अभी एक सुबह ही कॉल हुआ है, और उसके बाद ये स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं. लेकिन अभी 2 बजे और एक मीटिंग है मेरी, और शाम को और एक रहेगी. ठीक है. ओह, ही इज अ स्टूडेंट एंड डूइंग द टू जॉब. नाइस. आप कौन से 2 जॉब कर रहे हो? ओके. आप कहाँ पर काम कर रहे हो निखिल भाई? आप मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट करना, हम कनेक्ट करेंगे जरूर से. ठीक है. लेट्स गो इनसाइड आवर ऐप.
So let's create the app here, app.tsx, app.tsx. This is the main rendering system. I'm a full stack dev with 1 year experience, Mon type. Sometimes next. Okay, next is the one of the best. Whenever I, whenever someone will ask me what is your one of the best framework you used to work. At that time, I used to say Next.js. Why? Because Next.js come up with the very cool functionality, just like versal integration and any big framework library supports the Next.js. Okay, that's why Next.js is the first choice to me. Let's add some imports and ठीक है ये परमिशन प्रॉम्प्ट कंपोनेंट्स परमिशन प्रॉम्प्ट क्या हमारे पास है क्या ये एरर क्यों दे रहा है फिर इज डिक्लेयर ओके ये टाइप्स वाला है दैट्स व्हाई हाउ डू यू लर्न निखिल भाई आप कहाँ पर काम करते हो मैं वो पूछ रहा था आप अभी काम कर रहे हो या फिर इंटर्नशिप की है हाउ यू लर्न दिस सब गाइस यार एआई है आज के जमाने में आज कुछ भी मतलब आप लर्न कर सकते हो इट्स प्रीटी इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड एनी कॉम्प्लेक्स टॉपिक बिकॉज जो मेरी जो बैंगलोर वाली कंपनी थी ना उसके अंदर उन्होंने एक मतलब हम जो है ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे थे जो कि एग्जिस्ट नहीं करता इट्स प्रिटी न्यू इन द मार्केट एंड इट्स द कंप्लीट फिनटेक प्रोडक्ट वो कंप्लीटली शेयर मार्केट वगैरह वगैरह के रिलेटेड प्रोडक्ट था वो काफी ज्यादा मुश्किल था और उसका जो बैकएंड डिजाइन था ना वो काफी ज्यादा हेवी था तो मैंने भी तब एआई का यूज किया था मैंने भी मतलब बहुत सारे ये होते फॉर पीछे सुपर पावर आपने सुपर पावर का नाम सुना है मैंने भी रिसेंटली उसको डिस्कवर किया था तो ये काफी ज्यादा पावरफुल फ्रेमवर्क आप उसको कह सकते हो ठीक है लेट्स ऐड सम एक्सपोर्ट फंक्शंस so will you use the code or of VS Code right as it open source so will you use the code of VS Code right as it open source मैं VS Code का कोड क्यों यूज करूंगा वो ओपन सोर्स है तो मैं जो मोनाको कोड एडिटर आता है मैंने उसके साथ काम किया है और मैं आपको क्वेश्चन समझा नहीं अगर आप कुछ और पूछना चाह रहे हो तो ये स्ट्रिंग्स वगैरह क्यों मुझे एरर्स दे रही है मे बी और मे नॉट बी परमिशन चॉइस ये तो मेरा टाइपस्क्रिप्ट वाला एरर है ये क्यों एरर दे रहा है Oh, ये तो यहाँ पे नहीं रहेगा Hmm, ये लगता है मेरे प्रिटियर ने ऐड कर दिया था नल let's see let's give some permission block here let's add the permission block and let's set up our AI agent so let me do and copy the thing यार मैं बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाली फाइल है 200 लाइन की है मैं इसको जो है जिस्ट के अंदर डाल दूंगा तो आप लोग भी इसको यूज कर पाओगे क्रिएट न्यू जिस्ट यहाँ से app.tsx सॉफ्टवेयर ऐप ऐड कर दूंगा मैं इसके अंदर ठीक है आप लोग इसको एक्सेस कर लेना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है इसके अंदर हमने हमारा जो भी एजेंटिक एआई वाला वर्क है जैसे कि ईएनवी के अंदर हमको अभी बनानी पड़ेगी ईएनवी बाय द वे हमने अभी तक बनाई नहीं है हम जो टर्मिनल से एक्सपोर्ट कर रहे थे ठीक है लेट्स गो एंड ऐड दिस एंट्री पॉइंट इन आवर दिस इंडेक्स फाइल ठीक है तो हमें अब इस चीज की कुछ भी जरूरत नहीं है ये हमने काफी ज्यादा रॉ बनाया था तो अभी इसको अभी एक बार पीएनपीएम करना पड़ेगा हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा ठीक है ये इंक वगैरह जो भी है ठीक है ये मेरा टर्मिनल है बाय द वे इसको आप सीधा रूट से भी डाउनलोड कर सकते हो बिकॉज हमने फिल्टर तो ऐड किया ही है यहाँ पर
ठीक है, एंड लेट्स आल्सो ऐड टाइप ऑफ दैट। ठीक है, ये गायब क्यों नहीं हुआ? इंक को तो हमने डाउनलोड कर लिया है। Ink render ink cannot find the ink. Let's quick fix that. Oh, maybe that's the problem because of our, yeah, एक सेकेंड, इसको सॉल्व कर सकता हूँ। Let's go inside of our package CLI and ts up file, and inside this file let's handle our JSX. So let's handle our JSX. JSX is still giving us the error. Why? So let's see the error. फिक्स वो पायलट से करते हैं यार, मैं अभी बोर हो रहा हूँ थोड़ा सा। कमेंट आउट कर दिया इसने। ठीक है, मैं एक बार pnpm बिल्ड करके देखता हूँ, अगर कुछ एरर आते तो। बिल्ड ऑब्वियसली एरर्स तो आने ही वाले, अगर नहीं आए तो हमारा टाइम बुरा है। ठीक है, ये जो है कहाँ पर आ रहे हैं ये एरर? परमिशन प्रॉम्प्ट, परमिशन प्रॉम्प्ट के अंदर एरर आ रहे हैं हमको। लेट मी ओपन दिस द परमिशन प्रॉम्प्ट इन माय कोर्स कंपोनेंट्स परमिशन प्रॉम्प्ट, एंड इसके अंदर ये 31 और 20 लाइन एक्सपोर्ट में दिक्कत दे रहे हैं ना। तो रिटर्न, क्या बोल क्या रहा है ये? टॉप लेवल रिटर्न कैन नॉट बी यूज इनसाइड द ECMAScript मॉड्यूल। ओके, तो ये एक्सपोर्ट, ओके ओके ओके, ये मतलब कि हमें पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और फिर क्या अब ये सॉल्व हो जाएगा? 90% तो हो जाना चाहिए, बचे कुछ ये मेरे प्रॉप्स के एरर है। लेट्स डू pnpm इंस्टॉल यार, वन मोर टाइम, वन लास्ट टाइम। ये अप टू डेट तो बता रहा है। pnpm build, let's add the build, and currently it's success. If build thing is work, then mm, let's set up our env guys. Also we added that somewhere here, not here console, ये तो हमारे console errors हो गए। ये बराबर है, आप टेंशन मत लो। ठीक है, let's set up our env key. uh, by the way, this is the free env, you can add your own. And let's start the npm start, and let's see the missing ECMAScript file server.js कहाँ पर। मैंने pnpm बिल्ड किया तो था फिर से एक बार। हम्म, ये मैंने pnpm बिल्ड किया था, मुझे पता है। ओरियन इज गिटहब रेपो, ओरियन इज गिटहब रेपो, यस गिटहब के ऊपर है ना ओरियन। मैंने अपनी की भी एक्सपोर्ट की। लेट मी आस्क द एआई, ये बोल क्या रहा है? गाइस, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना यार स्ट्रीम को प्लीज। जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज, इट मीन्स अ लॉट। ओके, ठीक है यार, ये मतलब वो क्यों नहीं रहा? आई थिंक हमको है ना, हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम ओरियन है गिटहब पे। हाँ, तो मतलब क्या प्रॉब्लम है?
अच्छा, मेरे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की है क्या? लगता तो नहीं है मुझे। अ, आपको जो है गिट डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक नहीं मिला क्या? मैंने डाला था यार। ठीक है वो, ठीक है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, मैं अपना GitHub/MD11 labs नहीं है भाई। ओरियन, ये देख रहा, ओरियन वाला, यहाँ पर 12 घंटे पहले यहाँ पर मैंने रीडमी वगैरह भी अपडेट कर दी। तो यू कैन मेक द स्टार। ठीक है, स्टार ऐड कर सकते हो आप। ठीक है भाई, सो मे बी लेट्स क्लोज दिस ऑल फाइल्स, लेट्स ओपन आवर पैकेज root.json एंड वही प्रोजेक्ट है क्या? यस, वही प्रोजेक्ट है, लेकिन वो वर्जन 1 है। जो कि हमने फेज 1 के अंदर कुछ एरर आ रहे थे तो मैंने स्ट्रीम स्टॉप कर दी थी। तो ठीक है, आपको अभी पता चल गया होगा। ठीक है, तो आप इसको बस क्लोन कर लेना। और एक बार ये स्ट्रीम अगर हो जाती है कंप्लीट बिना किसी एरर के, तो मैं यहाँ पर एक न्यू ब्रांच क्रिएट कर दूंगा और उसको मर्ज कर दूंगा। ठीक है, प्रोटेक्ट योर, ठीक है, ये मेरे रिमाइंडर व्यू। ठीक है, लेट्स चेक अवर प्राइवेट है ये स्क्रिप्ट हमारे पास, बिल्ड है, डेव है, क्लीन। मे बी वी डोंट हैव E2B का 11 लैब वाला है। नहीं, E2B का मस्ट ब्रो मतलब क्या यार, आप बोल क्या रहे हो, मुझे समझ नहीं रहा। ठीक है, एक सेकंड में आपको ना अपना ये वाला E2B वाला आपको चाहिए ना। E2B वाला मैंने शायद से अभी ये किया नहीं है। E2B वाला ये 11 लैब अलग है, ये नहीं है वो 11 लैब वाला अलग है। E2B का मैं अभी स्ट्रीम खत्म होते ही पब्लिक कर दूंगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, मुझे थोड़ा सा वाइप आउट करना पड़ेगा कंपनी वाले फीचर्स को। ठीक है, तो मैं वो कर दूंगा। तो लेट्स अपडेट अवर दिस फाइल विद दिस न्यू ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा न्यू ब्लॉक है। आपको समझ में आया अभी निखिल भाई, या फिर नहीं आया? pnpm इंस्टॉल, ठीक है, pnpm build, let's build it out and successfully build. मस्त आहे भावा, थैंक यू भाऊ, थैंक यू सो मच। And let's start the pnpm start, and again I get this error, module cannot find। कहाँ पर भाई? मैंने अब कुछ इंपोर्ट के अंदर भी कुछ दिक्कतें तो नहीं है? कैनॉट, कहाँ पर टेस्ट? यार मेरे इंपोर्ट में तो अभी कोई मतलब की नहीं है। निखिल भाई, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये प्रोजेक्ट को जरूर बनाना। अगर आपने मुझे आप मुझे याद करोगे, आप मुझे याद करोगे कि क्या ही प्रोजेक्ट बना लिया हमने, क्या ही प्रोजेक्ट, मतलब ये खतरनाक से प्रोजेक्ट होने वाला है। ठीक है, ये इंपोर्ट का ठीक है, लेट्स ऐड आवर CLI के अंदर जाना पड़ेगा हमको। यहाँ पर जो है, इसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया। नक्की प्लीज CLITS कॉन्फ़िग। यार टर्बो रिपो के अंदर प्रॉब्लम ये आई है हमको कि दैट्स व्हाई वी आर हिटिंग द एरर्स, बिकॉज हम जो है पैकेजेस का यूज करने वाले, वी आर नॉट यूजिंग द नेक्स्ट.js वेब एप्लीकेशन एंड डॉक थिंग, वी ऑलरेडी डिलीट दैट एट द स्टार्टिंग। ठीक है, मैंने उसको स्टार्टिंग में डिलीट कर दिया था। सो दैट्स व्हाई दिस थिंग इज गेटिंग अस द एरर। ठीक है, और ये स्टिल हमको एरर दे रहा है रिएक्ट JSX, और ये मेरा TSX है बाय द वे। तो मैं अगर इसको TSX कर दूं और TSX तो ये स्टिल काम नहीं करेगा। ठीक है, ये जो है
पैकेजेस के अंदर, कोर के अंदर हमको जो है टूल्स एंड कोर को भी थोड़ा सा एक्सपोर्ट सीजेस प्रॉपरली फॉर ईएमएस। कोर की पैकेज डॉट जेसॉन भी अपडेट करने को बोल रहा है। कोर की पैकेज डॉट जेसॉन ये रही, इसको भी अपडेट कर दो। पैकेज डॉट जेसॉन टूल्स की भी अपडेट कर दो, ये बोल तो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रीन वाला आ रहा है ना, वो हमने नया अभी ये किया है। लेट्स ऐड क्लीन npm install. So let's reinstall our all the dependencies. ठीक है, ये एक पैकेज है जो कि लेट्स बिल्ड, लेट्स सी। इस बार अगर हो गया तो हो गया यार। ठीक है, हो गया स्टार्ट। यप, ठीक है। तो लेट्स आस्क हेलो। मैं इसको जो है, यप यार, ये देखना कितनी बढ़िया तरीके से यूआई दे रहा है। आपने देखा, आपने देखा। हेलो, आई एम ओरियन, आई एम एन कोडिंग असिस्टेंट रेडी टू हेल्प यू। हाउ, give me the list of files that we have in root folder. Let's send. कितने बढ़िया तरीके से इसने जो नेस्टेड वाली फाइल्स भी हमको दे दी। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मैं जो है अभी इसको कमिट करने वाला हूँ गिटहब के अंदर। आई होप यू गाइज आर लाइक दिस। निखिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एट द एंड। एंड इस वाले फेज के अंदर हमने इतना कुछ खास किया नहीं, लेकिन ऑफ स्ट्रीम जाकर मैं डेफिनेटली है जो इसका वन ऑफ द बेस्ट यूआई ट्राई करने वाला हूँ। एंड उसके बाद जो है मैं इसको मर्ज आउट करने वाला हूँ। आई होप यू लाइक द स्ट्रीम। इफ यू लाइक दिस, प्लीज subscribe to the channel, like the video, and leave the beautiful comments in the comment section. And I will be see you in the next phase. Bye bye.